हेलो। आज के करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और मैंने ज़्यादा क्वांटिटी में करंट अफेयर्स डाले हैं सो दैट इट कुड बी लाइक जस्टिफाइड फॉर यू गाइस। Okay, so let's start today's current affair. So, India braces for disruption of air travel after Ethiopia's highly goopy volcano erupts. तो क्या हुआ है कि once upon a time in the remote afar region of Ethiopia there was a volcano named Haile Gopi. So that had been sleeping for thousands of years. Now one day it erupted violently. ठीक है, तो क्या हुआ उसकी वजह से कि like they were like sending up a huge cloud caches and sulfur dioxide and like there was no rock fragmentation high up in the sky. ठीक है, तो this ash like didn't stay in Ethiopia. क्या हुआ इससे? They didn't stay here in Ethiopia, right? Because of high altitude here, what they did, they through this Red Sea, they traveled to Yemen, right? Over this and then to Oman and then reached to northern and western part of India, right? And what it did, because of this, it like traveled to New Delhi, Rajasthan, northern and western part of India, right? So because of this moving loop of volcanic rush, what happened? Indian aviation authorities, like the DGCA, Director General of Civil Aviation, what they did, they raised alerts. क्यों? क्योंकि volcanic ash is very dangerous for airplanes. ठीक है, जैसे कि this can like melt like inside aircraft engines and it can damage them. ठीक है, और दूसरा it can scratch the windshield. अब अगर windshield scratch होती है तो क्या हो सकता है? Disruption हो सकती है in scene, right? And then it can block sensors also that pilots depend on, right? So imagine how dangerous it is, right? Then because of this, Indian aviation authorities like DGCA, right, and weather agencies immediately they issued the alerts कि खतरा है, right? So they took actions जैसे कि उन्होंने कुछ फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया गया, right? रीलोड करा और उसके बाद ऐसे सीरियस एक्शंस उन्होंने दिए, right? And monitor किया that how far this ash is traveling, right? So these ashes are traveling like upward 14 kilometers, right, in upward direction, right? So normal people ke liye it's not that much dangerous. Okay, now it is important to know that it does not affect the air quality by now. Okay, for the like on the ground for the normal people like us, but it did disrupt in travel. Okay, so airplanes ke liye kahin na kahin khatra hai abhi. Okay, now these meteorologists said that this ash could move away from the India by the next evening. So ये जो issue है वो temporary है. Okay, then it sent a very important message to us कि जो चीज इतनी thousands of kilometers के पार हुई है, right? It is still affecting us, right? So this is why it is important that we are connected together, right? So अब ये UPSC के लिए मैटर क्यों करता है? It is relevant because it comes up in GS paper number 2, right? Governance, international relations, and disaster management. Then GS number 3, environment and science and technology, right? And talks about infrastructure also. Then GS paper 3, environment, S&T, and infrastructure, right? So this is why it is important that we, if you cannot see, then come here. Then another thing is it talks about global interconnectedness. कि कैसे हम लोग connected है. Something that happened in Africa, thousands of like it happened like thousands of kilometers away, right? And it is affecting us. So it is telling us that how India must monitor and manage this global hazard, right? How we should monitor it. Then it talks about aviation safety and infrastructure also. कि इंडिया के सिविल एविएशन को देखना होगा that how we are managing these natural disasters, है ना? Then it also talks about disaster management and how we are prepared for these. कितना ज़्यादा prepare हम? Like the alerts were issued, right? Reroute किया गया flights को. So this shows us कि हम कहीं ना कहीं इस management में we are like properly able. Then environment and climate links also. That volcanic eruption can inject these aerosols into atmosphere, influence weathers and skies into the sky, right? So this is what it tells us कि natural disasters जो होते हैं, that how much prepared we are and how much we can contract these. Okay.
So this is important to note कि ये upward के direction में जा रहा है 10 to 15 kilometers के बीच में, right? In upward direction, so normal people on the ground level, it is not as dangerous, and it is said to us कि ये like by evening it can like move, right? अब इसे फायर फाइट ऑपरेशंस बहुत सारी फ्लाइट्स को कैंसिल किया गया, डिले किया गया और प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए गए बिकॉज ऑफ दिस, राइट? नाउ इफ यू आस्क अ क्वेश्चन कि मैम इसमें प्रिकॉशंस तो हम ले सकते हैं, बट व्हाट आर द थिंग्स दैट वी कैन डू? तो नेशनल डिजास्टर में वी कैन नॉट डू एनीथिंग, वी कैन ओनली टेक प्रिकॉशंस ऑन दिस. अंडरस्टूड? ओके. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट न्यूज. So Navy gets its silent hunter 80% homegrown in Mahe. So imagine Mumbai's dockyard on a very normal day. Ships are there, workers are there, right? Sea is there. But today something very special happened. Kya hua hai? Any idea about this news? Hello, hello. Anyone online? Any idea what this news is about? So Indian Navy introduced INS Mahe, and it's very important because this ship is made in India, right? And mostly by Indian engineers and workers. So more than 80% of its parts are made in India, right? So what it shows, like pehle we used to like import, right? But now we are making everything in India. Most of its part, 80% of its part are made in India. So what it sells to us? We are developing. Yes, exactly. So this is important because it shows that India can build advanced many of its ships, right? Then हमें INS माही चाहिए क्यों? Why do we need this? So India is like a very long coastline, ठीक है? So it is like in the shallow water, it is very much needed क्योंकि इसके ports और harbors are there, and then crowded coastal areas है बहुत ज़्यादा. This is why we need it. Then another thing is these enemy submarines may try to enter quietly, ठीक है? तो लार्ज नेवी शिप्स कैन नॉट मूव इजीली, ठीक है? इतने ज्यादा शैलो एरिया में इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मूव दोज शिप्स. तो इसीलिए दे आर बिल्ट फॉर लाइक डीप ओशंस, और दीज नेवी नीड्स अ स्मॉलर फास्ट और क्वाइट शिप्स. दिस इज व्हाई वी नीड दिस INS शिप, INS Mahe, right? Okay. Another thing is it's like silent hunter. It is called silent hunter because it can easily track the enemy क्योंकि छोटी है, faster है, ठीक है, and it can move into deep shallow waters. इसीलिए इसको silent hunter बोला जाता है. Okay. Another thing is it is like INS will move up and down to the western side of India's coastline, checking कि सब कुछ ठीक है या नहीं, if everything is safe or not, right? Another thing is that it can detect enemy submarines under water stress also. ठीक है. So it has like special things, like it can hear and spot and submarines hiding under the water also. So if an enemy tries to enter the quietly places, then INS Mahe can detect that, right? So it is very important for that. दूसरी that it can keep like watch near important ports also. जैसे कि गुजरात मुंबई है ना, ये बहुत ज्यादा busy places है, right? So INS Mahe will stay around and like it will like make sure that these are like dangerous and enters the ports also. Then other thing is that it will like protect India's coastline and sea routes also. Okay, so ships carrying goods, oil, and people traveling through the India's water also. So INS Mahe will make sure that these ships are safe and that India's sea borders are protected, right? So इन सारी चीजों के लिए बहुत ज्यादा important है. Now ये दो बहुत बड़ी बड़ी achievement दिखाता है. First, so we have discussed that it shows that now we are like not liable on others, right? We can make our things ourselves and we don't have to import, right? Then other thing, what it teaches us, what it teaches us to, that it's focusing on like protecting its coastal areas also, है ना? अब क्या हो रहा है कि हमारी नेवी भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो रही है, right? So there is no longer, you know, come only from the deep sea, right? So many risks comes from the near the shore in the shallow waters as well, ठीक है? और ये उसी चीज के लिए बनाई गई है, ठीक है? तो क्या है, INS Mahe specially built to guard those areas. So INS Mahe is small but very powerful and very important for us, है ना? Because this can move in shallow water and protect our coastlines also, है ना? From like underwater, hidden underwater enemies. So it proves that India's defense, right, technology is growing up and it helps us near safer sites also. Understood? Okay. Now, it is important because it connects us with GS paper number 2.
right? Because it talks about international relations and defense and security, right? Then GS paper number 3, right? Defense and technology के साथ साथ it talks about indigenous manufacturing and internal security, right? And it could be used in essay also when we talk about self-reliance in defense and maritime challenges and coastal security. कि हमने क्या क्या development की है, right? What Indian Navy is doing in developing it more. Understood? Okay. Now it is important because it talks about that maritime security कि इंडिया की सिक्योरिटी अब सिर्फ लैंड बेस्ड नहीं है, वाटर बेस्ड भी है, right? Our Indian Navy is also becoming strong and strong. This is why this news is important to us. Another thing is that indigenous defense production is there. Like 80% of homegrown content means India is reducing, right? Its dependence on imports. ठीक है, जैसे हम लोग हर चीज पहले import करते थे, now we are like losing that, right? And it's a good thing. Then another thing is that jointness of armed forces, that the presence of the army chief at the naval commissioning signals increasing this integration of three spheres, that is land, sea, and air, and it is developing side by side, right? Any pointer, anything you want to say? Coming to the next news. So Surya Khan sworn in as the 53rd CJI. Any idea about this? Any idea? Okay. So imagine a big old ship. Okay. Judiciary of India is big old ship, and now I'm mentioning old here for a reason. Okay, we read this concept of old. Okay. This is a big old ship, judiciary, right? And it is steered by a captain called Surya Khan. Hai na? So on 24th November 2025, what happened? He climbs up the helm and becomes the 53rd captain, that is Chief Justice of that ship. So Surya Khan comes from a modest background from Haryana, right? And he becomes a lawyer, then he judge, and gradually roses through the system. Now he is taking the highest post in the Indian judiciary, and he is the Supreme Court of India, right? And अभी important क्यों है? Because the captain of the ship sets the direction for how the judiciary works, right? What reforms and laws should be made, है ना? और वो किस तरीके से implement करने चाहिए, ठीक है? This is the duty of his. Now, during his journey, Suryakant has handled like big issues, जैसे कि interpretation of services laws, right? And talks about the constitutional rights, labor rights. इन सारी चीजों के बारे में उन्होंने बात की है और आगे उन्होंने इशू को बढ़ाया, right? And he will lead for around 15 months. उसके बाद he'll be retired, ठीक है? So अब ये हमारे लिए important है because this news is relevant with GS paper 1 and 3. We'll see कि कैसे relevant है and why we are talking about this. Okay. पहले तो ये GS पेपर नंबर 2 और GS पेपर 3 में आता है, right? Because it covers the Indian institutions, right? And it talks about the features और powers कैसे separate होती हैं, right? And talks about the executive also, right? And it tells about the roles and structure of judiciary of India, ठीक है? Constitution के बारे में हमें बताता है. And then it tells about the Supreme Court and High Court also, and then who appoints these CJI, right? So हम इन चीजों के बारे में सारा पढ़ने वाले हैं. So let's understand. Do you have any idea which article Constitution of India talks about the appointment of CJI? Any idea, online students? Okay. So Article 12, right? It talks about the appointments of these Supreme Court judges. And CJI and Supreme Court judges are appointed by our who appoints them? President of India, right? So President of India appoints them, right? So what happens? There is this word with which they are appointed, that is seniority convention. Seniority convention. Do you have any idea what it is? Okay, so do you remember in the starting I said that this is like an old ship, right? So there is a reason to it because the senior most Supreme Court judge is appointed as the next Chief Justice of India, ठीक है? तो ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि जो अपॉइंटमेंट होगा, राइट, वो सीनियर जज का ही होगा, बट इट्स लाइक अ ट्रेडिशन,
ठीक है, that has been like going on for ages, right? But this tradition developed, and what this tradition says, this says the judge who has served the longest in the Supreme Court, ठीक है, उसी को अपॉइंट किया जाएगा, राइट? तो ये कहीं पर लिखा नहीं हुआ है, ना इसका कोई रूल है, बट दिस इज लाइक अ कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन. It is like a tradition that has been like going on for years. Right? So what happens? The Supreme Court itself, in the famous three judges, this supported this practice. इसीलिए इतने टाइम से चल रहा है, right? अब होता क्या है कि this outgoing CGI, ठीक है, जो अभी CGI जा रहे हैं, this outgoing CGI, it will recommend name to law minister, ठीक है. अब this law minister, what he will do? He will give that name to prime minister, right? And then prime minister will advise, right, to president, and then this president will appoint CGI. जो भी legal requirements होंगे, that will be done through president, right? And then this CGI will be appointed. ठीक है. अब क्वेश्चन आता है कि क्या जो ये जो कॉलेजिज्म सिस्टम है, दिस सिस्टम, राइट, व्हिच आई एक्सप्लेन इट टू यू, क्या ये वापस हो सकता है? इज देयर एनी वे दैट इफ पीएम सेज दैट आई एम लाइक यू शुड लाइक सी रेफर द नेम, यू शुड लाइक थिंक अबाउट इट, ठीक है, रिकंसीडर किया जाए. सो डू यू थिंक दैट इट कुड बी चेंज्ड बाय द प्रेसिडेंट? एनी आइडिया? So can government send back a name? Like if it is law minister is giving them name, so can PM thinks and ask them to reconsider the name? Okay, so the government can ask the collegium to reconsider कि एक बार और reconsider किया जाए इस नाम को. But if the collegium reiterates कि अगर उन्हें उनका recommendation जो है, ठीक है, उसको खारिज कर दिया जाता है, then PM, the government must appoint the judge, ठीक है, फिर उसमें कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है. So this affirmed in the second judge case that happened in 1993 also, ठीक है. तो अब क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? तो पहला एलिजिबिलिटी क्या होता है कि ही शुड बी इंडियन सिटीजन, ठीक है, तो हमारे लिए भी है, आधार कार्ड बनवाना तो तुम्हारे इंडियन सिटीजन होना पड़ेगा, ठीक है. दूसरा हमारा क्या है कि हाई कोर्ट जज होना चाहिए एटलीस्ट फॉर 5 years, ठीक है. देन एडवोकेट फॉर एटलीस्ट 10 years, एंड देयर इज अ मेंशन ऑफ और हेयर नॉट एंड, राइट. देन अनदर थिंग इज दैट डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट होना चाहिए, ठीक है, इट्स वेरी रेयर कैटेगरी, ठीक है. देन टेन्योर ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस, सुप्रीम कोर्ट जज रिटायर एट द एज ऑफ 65 years, ठीक है, जितने भी महीने या फिर साल हैं उस अपॉइंटमेंट ऑफ सीजीआई, राइट, ही विल सर्व टू दैट पीरियड, एंड जैसे ही वो 65 हो जाएंगे ही हैव टू लाइक रिटायर, ठीक है. जैसे कि अभी के सीजीआई में ही विल बी रिटायरिंग इन 15 months. After 15 months he'll be like turning to 60 years, 65 years, so he'll be retired, ठीक है. Now, any question you have? Coming to the next news. नॉर्मल मैरिट वाला बंदा, नॉर्मल मॉडेस्ट बैकग्राउंड का बंदा सीजीआई बन गया, तो लाइक ये मैरिट और जो इंस्टीट्यूशन से इसको फेवर करता है कि मैरिट वगैरह से लोग पहुंच सकते हैं. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. तो जो ये चीजें बताई ना, these condition that he should be like Indian citizen, right, and he should serve for 5 years in High Court, right, and Supreme Court. तो ये सारी चीजें जो है president he can appoint apart from these three things. ये सारी conditions है to be CGI. बट अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि देयर इज अ नेम हु इज एलिजिबल, ठीक है, तो ये सारी चीजें कंसीडर करने की जरूरत भी नहीं है प्रेसिडेंट को. ऑल्दो ऐसा हुआ नहीं है, बट ही हैव दैट पावर. अगर वो अपॉइंट करना चाहते हैं किसी भी आदमी को जो उन्हें लगता है कि वो कैपेबल है उस पोस्ट के लिए, तो ही कैन हायर दैट पर्सन, ठीक है. अगर वो इंडिया की भी नहीं है, ठीक है, और अगर उन्होंने इतना टाइम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में नहीं भी सर्व किया है, तो ही स्टिल कैन हायर दैट. अभी ऐसा हुआ नहीं है, बट ही हैव दैट पावर, ठीक है. एनी क्वेश्चन यू हैव? Another important news, missing Ubuntu on the G20 leaders summit in Johannesburg. Any idea what happened here? So world met in this summit Johannesburg, ठीक है, साउथ अफ्रीका, फॉर मेजर G20. और ये पहली बार अफ्रीका में G20 समिट हुआ था. The South Africa host brings with a special idea and its own culture, that is Ubuntu.
So what Ubuntu means, I am because we are, and it's a very important concept, and somewhere it is very logical and reasonable also. क्यों? क्योंकि it talks about those developing countries, ठीक है? तो यहाँ पर because we are connected, I am because we are, what it says to you? What do you think? What it means? I am because we are. Any idea? Exactly. So this philosophy believes that people, or in this case, like nations, are deeply connected. Like one's well-being depends on others, and vice versa, and that's very true. Something that happened in South Africa, in Africa, right? That in Ethiopia, I'm sorry, something that happened in Ethiopia, right? It affected us, it affected India, ठीक है? So we all are connected, है ना? और अगर हम इतना ज़्यादा connected हैं, we need each other for development also. We need each other in natural disasters also. We need each other in like economic wise also, है ना? तो दिस कंसेप्ट समवेयर इज रेलिवेंट टू अस, ठीक है, बट इसमें प्रॉब्लम बहुत सारी हुई. तो साउथ अफ्रीका दिस ट्राइज टू सेंटर द स्पिरिट ऑफ उबुंटू. तो दे आर्ग्यू दैट ग्लोबल चैलेंज लाइक क्लाइमेट चेंजेस, डेब्ट राइजेस, ये सारे इश्यूज वहां पर उठाए गए थे, है ना, एंड इनइक्वालिटी, पॉवर्टी, दे शुड बी सोल्व, है ना, एंड बाय इंडिविजुअल कंट्रीज इट कैन नॉट बी सोल्व. वी नीड ईच अदर फॉर दिस, राइट? दिस वाज द कांसेप्ट ऑफ दिस समिट. तो there was this problem arise. The problem क्या हुई? Trump said that I am boycotting this. So he boycotted this summit because of South Africa's treatment of white farmers. Do you know story behind this? Okay. So he said that these white Afrikaners, farmers, ठीक है, जो South Africa में हैं, they are being attacked. ठीक है. So their land is being taken, and the South Africa government is not protecting them. He, made those claims on them. And he said that I cannot join a summit जो country ऐसे कर रही है लोगों के साथ में. तो this was like a public reason to us, but there are like different reasons जो हम अभी क्लास में बात करने वाले हैं. Ma'am, president of USA was not featured exactly. Okay, but there is like more reason behind these things. क्या क्या reasons है? अब क्योंकि वर्ल्ड पॉलिटिक्स कभी भी सिंपल नहीं होते, बहुत सारी चीजें होती हैं उसमें. तो पहला रीजन है हिडन लाइक द मेन टॉपिक ऑफ द समिट. उसे टॉपिक ही समझ में नहीं आया समिट का क्या है, क्योंकि टॉपिक इज लाइक जोन्सबर्ग समिट हुआ कि हम लोग ग्लोबल इक्वालिटी के बारे में बात करेंगे, हम क्लाइमेट जस्टिस के बारे में बात करेंगे, हम लोग बात करेंगे डेब्ट रिलीफ फॉर पुअर कंट्रीज, ठीक है, और हम ज्यादा रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात करेंगे ग्लोबल साउथ के, ठीक है, ये सारी चीजें कंसिडर की गई समिट में. सो दीज टॉपिक्स आर लाइक Trump usually disagrees with. He says that America should not take responsibility for others. अब ये वो वाले होते हैं ना कि like there is this elder brother in the family who is taking responsibilities of younger brother, है ना, although they are working also, but क्योंकि elder brother है ना, they have to, and he's more responsible and have like more qualities and more things and he have that authority. तो वो ताऊजी होते हैं ना बड़े वाले जो नहीं मान रहे हैं, ऐसे वाला कंसेप्ट है यहाँ पे. तो ट्रम्प सेड दैट आई विल नॉट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ देम, ठीक है. और दूसरा रीजन है कि दे लाइक ट्रम्प रेफर्स 101 डील्स, ठीक है. अब क्योंकि ट्रम्प की डिप्लोमेसी क्या है, डायरेक्ट है, ठीक है, ट्रांजैक्शनल है, और वो बिल्कुल डील मेकिंग में बात करते हैं. बट दिस दिस G20 summit that happened, it is like opposite of what he believes in. Then he is sending this political message, this politics message back at home. जो फार्मर्स के साथ में हो रहा है, it's sending his message there कि मैं तुम्हारे साथ में हूँ, that I am boycotting South Africa's because I support white farmers, ठीक है. And Trump appeals to a certain section of these supporters in the US, ठीक है, and it makes him look very strong and decisive and taking a stand because of those white farmers. So this helps his political inside America. Understood? Okay. दूसरा है कि डिसएग्रीमेंट जो साउथ अफ्रीका साथ चल रहा है एट द ग्लोबल पोजीशन, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं उस चीज पे ही इज सेंडिंग दैट मैसेज टू अफ्रीका आल्सो, राइट. So those supporting global south, right, he disagreed with that and demanding for treatment for developing nations and reforming world institutions also. So sometimes this doesn't match his priorities, okay, and so this boycott is like geopolitical message to us. Understood? अब उबुंटू का पहला कंसेप्ट ही ये था कि वी हैव टू बी यूनाइटेड, वी हैव टू बी टुगेदर, ठीक है. नाउ दिस कंसेप्ट ऑफ उबुंटू, राइट, दिस इज लाइक टोटली डिफरेंट. What it says that we have to stand together for the like development, right, and this is like G20 was divided. अब उसका मेन मकसद ये था कि हम सारी कंट्रीज को एक साथ लेकर आएंगे, then we'll talk about the development, right. अब उसका बिल्कुल this biggest economy skips the this meeting, right, and this makes the other countries look weak.
अब अगर यूएस इट्स लाइक डेवलप्ड कंट्री है ना, एंड इट्स वेरी स्ट्रांग, अगर वही नहीं आ रही है तो लाइक देयर वाज नो पॉइंट राइट ऑफ दिस वर्ड ubuntu. Then this spirit was missing, and another thing is the global teamwork becomes very harder, right? So this climate action, poverty reduction, this debt relief, see this all need cooperation. अकेले किसी कंट्री से और डेवलपिंग कंट्री से तो बिल्कुल नहीं हो सकता, राइट? सो विद द यूएस मिसिंग डिस्कशंस बिकम्स लेस इफेक्टिव. तो G20 समिट का जो रेलेवेंस था, ठीक है, जो मोटिव था, कहीं ना कहीं वो स्प्लिट हो गया, दैट वाज मिसिंग, राइट? उसका जो मेन मोटिव था वो कहीं दिखा ही नहीं. सो इट वाज लाइक समथिंग जो काम नहीं करा, एक आइडिया जो काम नहीं करा, राइट? नाउ okay, so now these large powers they did not fully commit. ठीक है, अब यूएस आया नहीं, राइट? सो दीज बिग पावर्स डिडंट कम, तो ये कहीं ना कहीं वीकनेस शो करती है अबाउट दिस समिट. देन इट टॉक्स अबाउट ग्लोबल कॉर्पोरेशन नॉट स्ट्रांग इनफ इन सब्सटेंसेस. ग्लोबल कॉर्पोरेशन डिवीजन हमें देखने को मिला यहाँ, है ना? देन इट टॉक्स अबाउट रिस्क ऑफ दिस एम्प्टी रिटोरिक. सो हमने इतने बड़े बड़े वादे तो कर दिए, बट इम्प्लीमेंटिंग दिस इन रियलिटी, राइट, इट नीड्स करेज, इट नीड्स लॉट्स ऑफ इफेक्टिवनेस, इट नीड्स लॉट ऑफ प्लानिंग ऑल्सो, और वो G20 समिट, इस G20 समिट में हमें दिखाई नहीं. Understood? Okay. Now, next is labor and honor on the 4 labor codes and the path ahead. So there are 4 codes that are implemented. Any idea what it is? Labor codes बनाए गए हैं 4. Any idea? 4 labor codes. Which idea? Anyone? Okay. तो ऐसे समझो कि जो इंडिया का लेबर सिस्टम है, इट्स लाइक अ मेस कवर्ड, ठीक है? वहां पे पहले 29 डिफरेंट रूल्स वर देयर. इमेजिन अ मेसी कबर्ड, ठीक है, जहाँ पे चीजें डिवाइडेड नहीं है, ना तुम्हारा कॉलेज डिवाइडेड है, ना तुम्हारे एथनिक, ना वेस्ट, राइट? इट्स अ वेरी मेसी, इट्स वेरी कंफ्यूजिंग, राइट? सो सेम वाज दिस लॉ सिस्टम, ठीक है? अलग अलग वहां पर 29 डिफरेंट रूल्स थे. सो व्हाट गवर्नमेंट डिड, व्हाट गवर्नमेंट डिवाइडेड दिस इनटू 4 लेवल, ठीक है? 29 से 4 में डिवाइड कर दिए. सो व्हाट डू यू थिंक, इट्स अ गुड थिंग और बैड थिंग? गुड. ओके. सो अब इतने सारे रूल्स हैं, इतने सारे फॉर्म्स, इतनी सारी चीजें, ठीक है? तो इट वाज वेरी कंफ्यूजिंग एंड वेरी स्लो टू अस, ठीक है? अब उतना स्लो में से 4 हमारे दीज कोड रूल्स आर मेड. तो अब क्या हो रहा है, गवर्नमेंट इज फाइनली क्लीनिंग अप दिस कवर्ड. क्या किया उन्होंने कि 4 लेबर कोड्स बनाए गए हैं. फर्स्ट इज वेज कोड, जिसमें हम लोग बात करेंगे अब रूल्स अबाउट सैलरीज और पेमेंट्स. अनदर कोड इज इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, ठीक है? हम लोग बात करने वाले हैं रूल्स ऑफ स्ट्राइक्स, हायरिंग्स, है ना, और उसके बाद फायरिंग के बारे में, ठीक है? तो ये सारी चीजें, ठीक है, एंड इट इज टू होल्ड द अकाउंटेबिलिटी फॉर वेजेस वर्कर्स आल्सो एंड फॉर द एम्प्लॉयर आल्सो, ठीक है? दोनों के रूल्स के बारे में हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं. देन सोशल सिक्योरिटी फॉर्स व्हिच इज लाइक गोइंग टू टॉक अबाउट पीएफ, ईएसआई और मैटरनिटी लीव्स. देन फोर्थ इज सेफ्टी एंड वर्किंग कंडीशंस कोड, हेल्थ के बारे में, सेफ्टी के बारे में, वर्क प्लेसेस पे कैसा एनवायरनमेंट होना चाहिए, अबाउट दिस वी आर गोइंग टू टॉक इन द फोर्थ रूल, ठीक है? अब ये चारों कोड जो हमारा रिप्लेस करते हैं उन 29 लॉज को, राइट? एंड दिस मेक्स एवरीथिंग सिंपलर एज फॉर नाउ, राइट? बट देयर आर डिफरेंट कंसर्न्स दैट आर राइज एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट आल्सो. नाउ प्रॉब्लम क्या है कि businessmen, employees, they are happy with that, right? So for businesses, अब क्या होगा कि पेपर वर्क लेस होगा, ठीक है? अगर लेस पेपर वर्क हो रहा है तो कंफ्यूजिंग रूल्स कम होंगे. अगर ज्यादा कंफ्यूजिंग रूल्स नहीं है, राइट, तो हमारा जो अप्रूवल है दैट विल बी फास्टर, राइट? अगर हमारा अप्रूवल फास्टर है तो हमारा कंपनी रन करने में इट विल हेल्प अस, तो कहीं ना कहीं इट्स गुड, राइट, फॉर बिजनेस में. नाउ बस एडिटोरियल वांट्स दैट समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? दिस आर्टिकल वांट्स समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट कि जो ये लोअर लेबर्स है, लाइक इट शुड टॉक अबाउट प्रोटेक्टिंग वर्कर्स आल्सो, ठीक है? इट शुड टॉक अबाउट गिविंग देम डिग्निटी, राइट? इट शुड टॉक अबाउट कि उन्हें फेयर ट्रीटमेंट दिया जाए, राइट? एंड इट शुड लाइक मेक वर्क प्लेस सेफ आल्सो फॉर दोज पीपल. If you are dividing these 29 different rules into these 4 label codes, so make sure that you are mentioning
each and everything, ठीक है, वहां पे वर्कर्स के बारे में भी बात होनी चाहिए, राइट. देन this matters because labor laws like state or center, right, because center ने तो तुम्हें regulations दे दिए, right, they gave these 4 labor codes to you, but implement कौन करेगा? State, right? So center says that I will help you, I will hold your hand and I will help you to implement these things. So here we got to know the rules, the working periods between center and state, how they will work, right? So center made the codes and state must make the detailed rules under these codes, है ना? And it should like make sure that these rules and regulations are implemented also. They should check it wisely. Then government says it will handhold states to make good rules. Understood? Okay. So India has like a huge young population. ठीक है, we all know that. अब क्या होता है कि हर साल like millions of youth पास employment के लिए. तो अगर more jobs होंगी, ठीक है, तो it will be more formal, right? Proper contracts होंगे हमारे पास, and then workers can get social security also, and then safety and health conditions can improve, है ना? And then like these can be very good for India's future, ठीक है. अब क्या है, workers unions are not fully happy with this. वो खुश नहीं है इससे. Any idea why? 29 में से अगर तुम लोगों ने 4 कोड रूल्स बनाए हैं, तो व्हाट डू यू थिंक दे माइट बी फेसिंग प्रॉब्लम विद? इतने सालों के बाद भी देयर आर कंसर्न्स व्हिच स्टिल अनरिजॉल्व्ड फॉर द वर्कर्स, ठीक है, उनकी सुनी नहीं जाती है. And now there were like 29 rules and you made these 4. So do you think those 4 rules are like mentioning each everything, mentioning each problem of those workers? So these are the concerns that these workers are coming up with, right? So they fear that these reforms may favor companies more. Employees को ज़्यादा दी जाएगी, right? So they want stronger practitioners for this. So these labor reforms can be a win-win only if like companies get easier rules, है ना? And workers get better protection. कि उन्हें अगर fire किया जा रहा है, तो there should be like reason to it, right? And in what days, in how many days you are firing it, that should also be mentioned. It is mentioned और आगे हम पढ़ेंगे कि क्या-क्या problems हैं उनको, ठीक है? तो ये सारी चीजें तभी होंगी अगर स्टेट जो है हमारे फेयर रूल्स बनाएंगी, तो अगर हमारी वर्किंग डिग्निटी जो है वो प्रोटेक्ट हो पाएगी, राइट. एंड देन रिफॉर्म्स डोंट बिकम ओनली प्रो बिजनेस, ठीक है. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट बिजनेस ओनली, वी आर टॉकिंग अबाउट वर्कर्स ऑल्सो, right? Only then those rules will be considered good for them, right? So अब यूपीएससी के लिए मैटर करता है for paper 2 and GS3, right? Because it talks about quality and governance, है ना, कि कैसे स्टेट और सेंटर ने हमें रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए, एंड देन स्टेट हैव टू like implement them and have to reorganize them, right? And then also social justice and economic reforms, ठीक है, what development, what changes will arise here, right? Then it talks about labor governance, role of the state and social security, formalization of works, इन सारी चीजों के बारे में ये बात करेगा. So there is this thinker, Marx, perfectly fit here. Why? Because he talks about what? Workers and capital. What exactly he said? What did he say? So he believed, he said that these workers are the real creator of the wealth, है ना? And that any society must protect their dignity. And that's what they are mentioning in this article also. That's what the concern is arising here also. So imagine a thinker who like gave this idea like so many years back, right? Those ideas still relevant today. The same problem we are facing today. Is it a good thing or a bad thing? The same problem we are facing today. The workers are facing the same problem, right? Something that he mentioned like so many years back, right? अब भी हमें वो सारी problem face करनी पड़ रही है, right? So his idea totally matches here because he argued that when labor is treated only as tool for profit, right, then we can never move towards development, right? He talks about the rules and regulations and he talks about the safety of workers, right? So these codes promise better wages, safer workplaces and wider protection, which aligns with Marx's beliefs also, right? Because he also talked about that, right? So if it comes to mentioning these current affairs, right, in polity and governance or in essay or ethics,
You can mention it with the example of Karl Marx because he perfectly fit here. Okay. Now, the 4 labor codes are like among the biggest labor laws that happen in this India, right? So they are very likely to feature in F or mains or GS2 के paper में that we have discussed. अब problem क्या है? These 4 labor rules, right? They talks about wages, industrial relations, society structures, and occupational safety and health, है ना? So this code replaces 29 labor rules and regulations. अब central government will handhold states, ठीक है, implement center कराएगी, right? This state will recognizes these rules and will make sure that these are implemented properly and are used efficiently, right? Then these business strongly support these reforms. जितने भी businesses हैं, they are happy with these things. क्यों? क्योंकि जो rules and regulations के पहले, right? They required too many licenses, ठीक है? और दूसरा they had to like file many reports again and again. And then other thing is ruled from different state to state. अलग-अलग state का अलग-अलग rules and regulations थी. लेकिन अब क्या होगा? अब ये होगा कि एक ही रजिस्ट्रेशन होगा, है ना? और दूसरा एक ही लाइसेंस रहेगा, एक ही एनुअल फॉर्म रहेगा हमारे पास, ठीक है? तो जो स्टेट टू स्टेट अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस है हमारे पास उस चीज की जरूरत अब नहीं पड़ेगी, राइट? Then these codes are meant to address new India youth bulge also that we have discussed. अब नई नई employments आएगी तो it will help us, contracts बनाए जाएंगे, है ना? It will help them to give more rights, right? It will help them to work in an environment जो healthy रहेगा. ज़्यादा environment healthy रहेगा तो they'll be able to work more efficiently, right? So it will help into that also. Then labor unions are not completely happy with this. वो इसलिए नहीं है बिकॉज जहां पे इतने सारे, ठीक है, इंडिया में जहां पे करोड़ों लोग काम कर रहे हैं, राइट? एंड देयर डेली ब्रेड थ्रू दिस फैक्ट्रीज एंड कंस्ट्रक्शंस और ये शॉप्स के थ्रू चलता है, राइट? तो वहां पे 29 लेबर लॉज से तुम एकदम से 4 लेबर कोड्स में शिफ्ट हो जाते हो, तो इट्स नॉट अ गुड थिंग फॉर देम, क्योंकि हर एक चीज का मेंशन नहीं है। जो 29 कोड्स यहाँ पर मेंशन किए गए थे, रूल्स मेंशन किए गए थे, सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस इधर मेंशन नहीं है। So this is problematic for those workers here, and this is why they are issuing that concern, right? So पहली प्रॉब्लम है कि ये जो नई रूल बुक आई है, राइट? देयर वर मेनी रूल बुक्स। इस 29 रूल्स में बहुत सारी रूल बुक्स थी, ठीक है, जो वहां पे होल्ड कर रही थी राइट्स, बट हियर ओनली लाइक फ्यू आर मेंशन्ड देयर, राइट? सो दिस इज प्रॉब्लमेटिक फॉर दोस. So this is something, right? This rules made it difficult for employees to fire them suddenly also. Then new rule books arrived, and now suddenly the government brought this 4 new rule book, which talks about code on wages, industrial relations code, social security code, and an occupational society, right? So पहला तो companies can hire easily and can fire workers also. आप hire करते हो and easily fire you can also do, right? So पहले 300 दिन का workers को like you have to give the notice, like 300 दिन का मिलता था, but now they are giving like 100 days of notice. कम time दिया गया, 300 से the shift is towards 100. So this is like problematic to workers. Understood? Then the worker saying that this makes our job less secure. ठीक है, security है ही नहीं. Then another problem is that the worker must give 14 days before going on strike. 14 दिन पहले तुम्हें बताना पड़ेगा कि तुम स्ट्राइक पर जा रहे हो. अब अगर कोई लेबर स्ट्राइक पर जा रही है तो they can easily raise them, right? Now even raising their voice, right? They have to give the notice before 14 days, right? So industries are not earlier covered by this rule, but now they have to follow it, right? So this striking makes difficult, right? And this bargaining powers becomes very weak for laborers. Okay? So this is a issue that they are arising up with. अब वर्किंग आवर्स जो है वो इंक्रीज कर दिए गए हैं, राइट? तो पहले दिस 12 सॉरी पहले था आई थिंक 10 आवर शिफ्ट, नाउ इट इज टू 12 आवर शिफ्ट इंक्लूडिंग रेस्ट आवर्स आल्सो, ठीक है? तो कहीं ना कहीं दिस टोटल आवर्स स्टिल यू नो दिस कैप्ड वीकली, बट डेली आवर्स जो है वो स्ट्रेच कर दिए जा सकते हैं, ठीक है? तो दिस मीन्स दैट नो लॉन्गर यू कैन यू नो टेक रेस्ट, और फिर वो चीज उनके लिए प्रॉब्लमेटिक है. नाउ दिस सोशल सिक्योरिटी ये ठीक है, बट थोड़ा अनक्लियर है. ये क्यों है अनक्लियर? बिकॉज सोशल सिक्योरिटी कोड प्रॉमिसेस बेनिफिट्स लाइक पीएफ, ईएसआई, है ना, मैटरनिटी लीव्स, राइट, एंड दीज प्रोटेक्शंस, वर्कर प्रोटेक्शंस आल्सो. बट यूनियन बोलती है कि दिस बेनिफिट ऑन पेपर्स लुक गुड, बट रियलिटी में विल बी इम्प्लीमेंटेड और नॉट, दैट वी डोंट नो, राइट? और उस चीज के लिए द स्टेट, राइट, हाउ मच एफर्ट्स दे आर पुटिंग इन, right? How much system is putting their efforts on checking in it that if they are like implemented और हमारे rights हमें मिल भी रहे हैं नहीं, because previously they complained अगर protest पे जा रहे हैं, right? तो उनकी complaint अभी तक resolve भी नहीं होती है, ठीक है? So these are the issues that they are facing up with. Understood? So this protection becomes optional for them, right?
So some earlier laws forced like companies to provide facilities like canteens and a welfare officers. But in these new codes, these applies only above, certain three thresholds also, right? Now these four codes, right, they talks about ऑल द इंडस्ट्रीज, ठीक है, जो वर्कर्स है जोमेटो के, राइट, ऑनलाइन एप्स के भी यहाँ पे उनके लिए भी मेंशन किया गया, बट अगेन द प्रॉब्लम इज दैट these rules and regulations, they are not, precise, they are not clear, they are not vivid, right? So these are the issues that they are facing. जैसे यहाँ पर था 29 rules में, right, there were certain things which were like beneficial for these workers, but इधर in 4 rules में वो चीज mention नहीं है. Understood? Any question? Labor code is good for government employers and non-government. Yes. Yes. And formal informal groups. Yes. Okay, so one question, prelims question that came last year. Answer this.